अच्छा, May 2021 वेरिएंट 12 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द केस। अब तो हम केस रीड करने के भी थोड़े एक्सपर्ट हो गए ना। वी नो दैट वी हैव टू विजुअलाइज द केस, वी नो दैट वी हैव टू बी लाइक कि ये हमारा क्लाइंट है और हम बिजनेस एडवाइजर हैं। ठीक है। राहुल owns a small farm that grows oranges. Small farm, small farm. Small farm is a primary sector business or a secondary sector business or a tertiary sector business? Small farm. Farm is what? Primary sector, secondary sector or tertiary sector? Primary sector, yes. ठीक है. Raul owns a small farm that grows oranges. Good. His farm is based in country Z. Like all primary sector activities, farming creates external costs and external benefits. External costs का मतलब पता है? एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो एक सोसाइटी को पे करना पड़ती हैं बिकॉज ऑफ सम बिजनेस एक्टिविटी। एक अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूं तो वो नुकसान जो सोसाइटी को फेस करना पड़ते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, उन कॉस्ट्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिजनेस एक्टिविटी कुछ कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो पोल्यूशन पोल्यूशन इज वन ऑफ द एक्सटर्नल कॉस्ट्स। ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा एक बिजनेस, कोल ऑयल, जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करता है एक बिजनेस कंट्री के, दोज या द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज is also one of the cost that the society will have to pay. सही है, इट्स नॉट फाइनेंशियल कॉस्ट, पैसे नहीं देने होते किसी को, बट स्टिल एक नुकसान जो सोसाइटी को फेस करना पड़ता है ड्यू टू एनी बिजनेस एक्टिविटी, उन कॉस्ट्स को कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट्स। और जो फायदे एक सोसाइटी को, एक कंट्री को होते हैं ड्यू टू अ बिजनेस एक्टिविटी, उन सारे बेनिफिट्स को हम कहते हैं, यस दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द थर्ड पार्टीज। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, for example tax revenue for government, for example new investments, for example GDP पे contribution, exports पे contribution. So basically there are a lot of costs and there are a lot of benefits that a society will have to pay uh, due to a business activity. सही है। राहुल सेल्स, हमारा क्या सीन है, हम ऑरेंजेस ग्रो करते हैं, वी आर ऑपरेटिंग इन द प्राइमरी सेक्टर एंड वी आर ऑपरेटिंग इन कंट्री जी। Raul sells all 600 tons of his oranges direct to drinks manufacturer in country E. ठीक है, कंट्री जी में हमारा फार्म है और कंट्री ई में हम ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरर को ऑरेंजेस सेल करते हैं। क्वेश्चन मतलब समझ आया? समझो जैसे ग्रीनो है, जैसे बहुत सारे जूस आउटलेट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली दे नीड अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस फॉर देयर जूसेस। सो बेसिकली हम फाइनल कस्टमर को ऑरेंजेस नहीं सेल करते, ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरर को हम सेल करते हैं, वो भी डिफरेंट एक कंट्री में। सही है। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ई प्लान टू इंट्रोड्यूस आइदर इम्पोर्ट टैरिफ्स और कोटाज। अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ई, जिधर हमारा कस्टमर है बेसिकली, प्लान टू इंट्रोड्यूस आइदर इम्पोर्ट टैरिफ्स। ओ इम्पोर्ट टैरिफ्स, अगर इम्पोर्ट टैरिफ्स, टैरिफ्स पता है, इम्पोर्ट टैरिफ्स होता है बेसिकली टैक्स ऑन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। लेट्स से अगर कंट्री ई में एक जूस मैन्युफैक्चरर है, ग्रीनो है, सही है, और हम हैं कंट्री जी में, सो बेसिकली द मैन्युफैक्चरर्स इन दिस कंट्री आर इंपोर्टिंग फ्रॉम कंट्री जी, राइट, है ना। यानी कि हमारे कंट्री से हम अपना सामान हमारे लिए तो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन कंट्री ई के अगर हम पर्सपेक्टिव से सोचें तो कंट्री ई में जो है वो बिजनेसेस दूसरे मुल्क से समझो ऑरेंजेस खरीद रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया या कोटा लगा दिया, कोटा पता है, quota, import quota is basically the limit, the physical limit, or the physical limit over the quantity that can be imported. तो अगर जो भी ट्रेड बैरियर कहते हैं उनको, ट्रेड बैरियर्स, तो ट्रेड बैरियर्स अगर गवर्नमेंट लगाती है तो क्या इससे हमारे बिजनेस में फर्क पड़ेगा? इफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ई imposes such trade barriers, will that impact us? Will that impact राहुल? राहुल को फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर सारे कंट्री ई के जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे प्रॉबेबली वो सोचेंगे कि यार इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ रहा है, टैक्स लग रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो मैन्युफैक्चरर को तो फिर ऑरेंजेस एक्सपेंसिव बाय करना पड़ेंगे ना, क्योंकि उस पर अगर टैक्स भी लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो हम बैठे हुए अपने मुल्क में
शायद अब इतना इजीली फिर कंट्री ई में अपना स्टॉक ना बेच सकें, क्योंकि वहां पे अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया या अगर इंपोर्ट कोटा लगा दिया तो फिर वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहां के मैन्युफैक्चरर्स सोचेंगे यार बाहर से मंगवाना बहुत महंगा पड़ रहा है, या कोटा अगर लगाया हुआ है तो शायद मंगवा ही नहीं सकते दूसरे मुल्क से, तो फिर तो हमारी सेल्स बहुत हिट होंगी, हाँ बहुत ज्यादा। और सारा का सारा स्टॉक हम एक ही कस्टमर को बेच देते हैं, ये देख रहे हो, मतलब ऑल 600, यानी अगर ये कंट्री ई में प्रॉब्लम आ गया, वी आर डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन मेजर कस्टमर, दैट्स अ बिग रिस्क, नो। राहुल said this might help country e's government achieve one of its economic objectives, but how will it affect companies that export to country e? ठीक है, which is basically talking about Raul. And will that impact the sales of Raul? बताओ, अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैरिफ और कोटाज लगा दिए तो क्या राहुल के बिजनेस या राहुल का जो फार्म है उसकी सेल्स पे कोई इम्पैक्ट आएगा? If the government decides to impose these trade barriers, then will that impact the sales of Raul? Obviously, right. Why? Because फिर हमारा तो सेल्स हिट हो जाएगी ना। पार्ट ए क्या कह रहा है? डिफाइन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है बताओ? गिव मी बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तीन इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। अब प्राइमरी सेक्टर यार इससे आसान हो नहीं सकता, इसमें आप मार्क्स लूज नहीं कर देना, बच्चों वाली डेफिनेशन लिख के, प्रॉपर डेफिनेशन। दिस इज वन ऑफ, लिखवाऊं डेफिनेशन? ये दे रहे हो? दिस इज वन ऑफ दी स्टेजेस, दिस, यस, गुड गुड। This is one of the stages of economic sector which includes all the businesses which includes all the businesses involved in the extraction of natural resources such as a farm, coal mining, and forestry. Fishing भी लिख सकते थे, and forestry. Forestry is basically cutting down trees and all that. तो natural resources, वो सारे businesses जो natural resources consume करने में या उसको extract करने में involved होते हैं, उन businesses को हम कहते हैं primary sector businesses. Secondary sector याद है? Secondary sector all those businesses which basically use the natural resources provided by the primary sector. They are in the processing stage, secondary sector businesses. And tertiary sector businesses वो होते हैं जो service provision में involved होते हैं, those who are which are those businesses which are involved in providing services to others. सही है, उसको कहते हैं tertiary sector businesses. A school is a tertiary sector business, है ना? A hospital is a tertiary sector business. A bank is a tertiary sector business. Part B. अब आप ये तुम लोग बताओ, शाबाश। Identify two government economic objectives. Identify two government economic objectives. Easy. इससे easy नहीं हो सकता। Lower level of inflation, reduce unemployment, increase economic growth, stable balance of payment, lower inflation, जबरदस्त, to decrease, good answers, to decrease the level of unemployment, और क्या लिख सकते हैं? To maintain stable rate of inflation, lower भी लिख सकते हैं वैसे, ये भी लिख सकते हैं to maintain a stable balance of payment, to work towards economic growth,
बहुत सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इजी. सही है. नहीं समझ आया पूछ लें, वैसे इजी आई थिंक. पार्ट सी. Outline one external benefit and one external cost that Raul's business activity might create. Outline one external benefit and one external cost that Raul's business activity might create. Tell me. External benefits. एक्सटर्नल बेनिफिट में क्या क्या आ सकता है? एक्सटर्नल बेनिफिट्स में बहुत सारे लिख सकते हैं. जीडीपी, टैक्सेस, एम्प्लॉयमेंट, गुड. जबरदस्त. और बताओ. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टैक्सेस. और कोई भी एक लिखना है, लेकिन अच्छा लिखना है. मतलब ज्यादा होशियारी करके ज्यादा पॉइंट्स नहीं डालने. मतलब आप मुनासिब रखें आंसर, लेकिन एक पॉइंट तरीके से समझा दूं. सही है. देखो मैं लिखता हूं. वन ऑफ द एक्सटर्नल बेनिफिट्स that one of the external benefits that Raul's farm will create is the employment opportunities. One of the external benefits that Raul's farm will create is the employment opportunities. Full stop के बाद समझाना है ना कि क्यों benefit होता है. He will need a lot of employees to grow 600 tons of oranges. Application देख रहे हो? He will need a lot of employees to grow 600 tons of oranges, and this will help country Z में operate कर रहे हैं. Applications देखो, application, and this will help country Z to minimize social problems by controlling low unemployment. By controlling low unemployment. पहले प्रॉपर में देखो स्टेट कर रहा हूं अपना पॉइंट, एंड देन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट व्हाई विल दिस बी एन एक्सटर्नल बेनिफिट फॉर अ कंट्री. इवन दो मुझे ये लाइंस इसने एक साथ ही दी हुई हैं, लेकिन मेरा माइंड उसी तरह से चलता है कि मुझे पॉइंट अपना स्टेट करना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है दैट व्हाई हैव आई रिटन इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देख रहे हो? और फिर एक्सटर्नल कॉस्ट. वन ऑफ द एक्सटर्नल कॉस्ट that this farm will create हाँ, बेनिफिट्स में ये भी लिख सकते थे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाएगा. बिल्कुल, यू कैन राइट कि इफ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज देन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन कैन इंक्रीज. यस. अच्छा, वन ऑफ द कॉस्ट दैट दिस फार्म विल क्रिएट, वन ऑफ द एक्सटर्नल कॉस्ट दैट दिस फार्म विल क्रिएट इज पोल्यूशन. एग्जाम्पल्स दो. एक थोड़ा सा बताओ यार तुम लोग जरा मुझे कि एक ऑरेंज के फार्म पे कौन सा पोल्यूशन, लाइक example, for example, if I want to give an example of a pollution created by an orange farm, give me maybe industry specific example. कौन सोच सकता है? Creative. Tractor products. Yes. Land and water pollution. ओए इतना ऊपर से आया भाई. और बताओ, सोचो जरा एक ऑरेंज फार्म के बारे में. इजी भी सोच सकते हैं. नॉइज पोल्यूशन थ्रू मे बी द साउंड ऑफ ट्रैक्टर्स, एंड ये एक नॉइज पोल्यूशन होगा. स्प्रेज एंड पेस्टिसाइड्स गुड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेज यूज करके एयर पोल्यूशन होगा. मे बी द वेस्ट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ, और द केमिकल्स ऑफ द फार्म विल बी डिस्पोज्ड ऑफ समवेयर, सो दैट्स आल्सो पोल्यूशन. बिल्कुल समझ आए. गुड.
One of the external costs that this farm will create is pollution during the orange, due to the orange को हम orange color से लिख रहे हैं, due to the orange growing process, the farm may create noise pollution, noise pollution with the use of machines and water pollution if the waste is disposed inappropriately. If the waste is disposed inappropriately. देखो again point state कर रहा हूँ. One of the external costs that this farm will create is pollution. During the orange growing process, the farm may create noise pollution with the use of machines and water pollution if the waste is disposed inappropriately. प्रॉपर आपने बता दिया कि वाटर पोल्यूशन भी तब जब आपने मुनासिब तरीके से वेस्ट डिस्पोज ऑफ नहीं किया. फुल एथिकल चल रहे हैं आप, सही है. और एग्जाम में हमेशा फुल आपको एथिकल ही रहना होता है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नेवर सजेस्ट एन अनएथिकल act by any business. You should know that why would business want to act unethical, maybe cost वगैरह कम करने के लिए, लेकिन कभी भी हम अनएथिकल एक्टिविटी को रेकमेंड नहीं कर सकते. ठीक है. Okay, part D. Explain two advantages to Raul's business of selling direct to manufacturer. Explain two advantages to Raul's business of selling direct to a manufacturer. Okay. What are the advantages to Raul of selling directly to the manufacturer? Tell me the advantages. Think about it. Think about it. क्या फायदा होता है कि अगर मैं अपना सारा आउटपुट अपने मैन्युफैक्चरर्स को सेल कर दूं, फाइनल कस्टमर को सेल ना करूं. ऑरेंजेस ग्रो करके मैंने एक ही बिजनेस 2-3 बड़े बिजनेसेस को सेल कर दिया. So how is this a benefit rather than I would have been selling it to the final customers, maybe one by one, maybe इस तरह फ्रूट शॉप होके या कुछ वो रिटेल तक मैं अगर सेल करना चाहता, लेकिन अभी तो मैं रिटेल तक गया ही नहीं, मैंने तो मैन्युफैक्चरर को ही सारा स्टॉक बेच दिया. तो इससे क्या क्या फायदा होगा? टू राहुल्स बिजनेस, राहुल को क्या फायदा होगा? राहुल को कोई एजेंट वाला कमीशन वाला सीन नहीं है. ये भी एक अच्छा पॉइंट है वैसे. गुड. और बताओ राहुल को क्या फायदा है कि अगर हम रिटेल बेचते जाके, रादर देन कि मैंने सारा स्टॉक मैन्युफैक्चरर को ही बेच दिया. पता है वेस्ट के चांसेस कम होते हैं, एक सबसे बड़ा फायदा होता है. ठीक है. वेस्ट के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपका सारा स्टॉक खरीद लेता है. और अगर सारा मतलब सारा इस सिचुएशन में सारा स्टॉक खरीद लेता है तो फिर क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम में डील कर रहा है, ऑरेंजेस हैं, उसकी फ्रेशनेस, तो अब डेफिनेटली अगर हम खुद से ग्रो करके फिर फाइनल कस्टमर या रिटेल कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश करें तो फिर उसके चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं. चैलेंजेस ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? फिर उसमें वेस्टेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपको फिर उसकी मैनेजमेंट भी देखनी होती है, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन करना होगा. मैनेजमेंट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज उसके लिए फिर ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करना है, फिर उसको कस्टमर का वेट करना है. फाइनल नहीं, प्रॉफिट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है. अगर मैं रिटेल कस्टमर्स या रिटेल तक जाऊं, इफ आई ट्राई टू सेल ईच लेट्स से डजन्स ऑफ ऑरेंजेस इस तरह से जो सेल करते हैं, तो अगर मैं उस तरह से बेचना चाहूँ तो शायद प्रॉफिट मार्जिन भी हो सकता है, लेकिन उसकी फिर मैनेजमेंट मुश्किल है. कस्टमर्स को डिफरेंट तरह से टारगेट करना पड़ेगा. अब जैसे फ्रूट बास्केट्स हैं और इस तरह के अब आउटलेट्स खुल गए अच्छे फ्रूट्स के ना, नाहीद है, तो अब वो दे ट्राई टू सेल इट टू द फाइनल कस्टमर्स. दे डू नॉट सेल इट टू मैन्युफैक्चरर्स. मे बी समझ आ रहा है?
स्टोरेज कॉस्ट बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टोरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाती है क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपसे बल्क क्वांटिटी में स्टॉक खरीद रहा होता है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम तक अपने पास वो चीज स्टोर नहीं करनी पड़ती, बिकॉज फाइनल कस्टमर्स तक जाओगे तो वो तो 1 at a time, डजन एट अ टाइम, 2 डजन एट अ टाइम, तो फिर वो ज्यादा टाइम तक 600 टन आपको फिर अपने पास रखना पड़ेगा, या जितना भी आपका स्टॉक है, तो उससे स्टोरेज कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाती है। गुड, समझ आया। एडवांटेज 1 मैं लिखवाता हूँ, लिखो, थोड़ा सा राइटिंग स्पीड फास्ट रखेंगे, सही है। एडवांटेज 1, the chances of wastages will decrease for Raul as this farm sells all of their 600 tons of output to to manufacturer to a manufacturer. Raul will not have to hold the oranges, and this will not have to hold the oranges for a long time period, which will minimize the chances of what? This will minimize the chances of wastage through getting perished. देखो थोड़ी सी भूलने की एक्टिंग कर रहा हूँ, जगह खत्म हो रही है। ऑफ वेस्टेज थ्रू गेटिंग पेरिश्ड, भूलने की एक्टिंग कर रहे हो, देखो इसको आप भूलने की एक्टिंग आप सीख जाएं। कभी कभी अगर आपको जगह कम पड़ी हो तो आप थोड़ी सी भूलने की एक्टिंग करके आप इसको बीच में सेट कर दें। समझ आ रहा है? Will minimize the chances of wastage through getting perished, and this will help minimize costs. This will help minimize costs. As this farm sells all of their 600 tons of output to a manufacturer, Raul will not have to hold the oranges for a long time period, which will minimize the chances of wastages through getting perished, and this will help minimize costs. खर्चे कम होंगे ना। बिजनेस बेसिकली बताना था कि मुझे क्या फायदा होगा। इट्स नॉट जस्ट कि ऑरेंजेस वेस्ट नहीं होंगे, बट वो डेफिनेटली जब वेस्ट नहीं होंगे तो फिर मेरी कॉस्ट पे प्रेशर नहीं होगा ना, एज अ बिजनेस अगर मैं उसको सोचूं। एडवांटेज 2, it might be much easier to manage as compared to selling it to final customers. It might be much easier to manage as compared to selling it to final customers. और इसकी explanation, क्यों easier क्यों होगा? The manufacturer buys in bulk, rather if final consumers are targeted, Raul would have arranged Rahul नहीं, sorry, Rahul तो कोई और है। Raul would have arranged, the manufacturer buys in bulk rather if final customers are targeted, Raul would have arranged transportation
transportation and other logistics. Logistics is a very nice word if you want to remember. Logistics होता है कि लोग अरेंज करना, रिसोर्सेज अरेंज करना, गाड़ी अरेंज करना, सामान डालना, सामान उतारना, ये जो सारे काम होते हैं ना, उसके लिए अच्छा वर्ड होता है logistics. सही है. The manufacturer buys in bulk. Rather, if final consumers are targeted, Raul would have arranged transportation and other logistics, which can full heavy लिखते हैं, सही है, which can reduce the focus of Raul on his farms, which can affect their quality. क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट पे फोकस कम होते हो, आप मतलब इजी अगर आपके लिए होता है कि बस आपने एक दो कस्टमर्स को बेच दिया, तो फिर आप रादर यू वुड बेटर फोकस ऑन योर फार्म्स, ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस. काफ़ी सारे लोग इसलिए भी फाइनल कस्टमर्स तक नहीं जाना चाहते, क्योंकि फिर उनको सेल करना, फिर उसको प्रमोट करना, और अगर आप उसको ब्रांड करना चाहते हो तो फिर उसकी ब्रांडिंग की वो एफर्ट है, उसके लिए फिर लोग चाहिए होंगे, उसके लोग को मैनेज करना होगा. सो यू नीड एन एंटायर टीम. इट्स नॉट एन ईजी जॉब. ऐसे नहीं कि बस गाड़ी में लाया और ऐसे बेच दिया. सो यस, सही है. कॉपी कर लो. पार्ट ई. डू यू थिंक, पार्ट ई देखते हैं ना. Do you think the introduction of import tariffs is likely to have greater effect than the introduction of import quotas on an exporting business? Justify your answer. ओए होए, कैसा सवाल है यार ये. मुश्किल सवाल है वैसे यार. Points. Do you think the introduction of import tariffs is likely to have a greater effect on the introduction of import quotas on an exporting business? Yes, that's tough. एक्सपोर्टिंग बिजनेस की बात हो रही है ना. देखो, अब सवाल को आप जरा ब्रेक करके सोचें. एक्सपोर्टिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जो अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाह रहा होता है. तो अगर एक एक्सपोर्टिंग बिजनेस है, दिल से राहुल फार्म की बात करते हैं. फार्म जो है वो हमारा, जो राहुल का फार्म है, बेसिकली इट्स इन कंट्री जी, एंड दे सेल देयर प्रोडक्ट टू कंट्री वाई, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इन कंट्री वाई जो कि कंट्री जी से ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. सही है, अभी तक स्टोरी ये है. सो बेसिकली ये अगर हम हमारे राहुल की बात करें, सो बेसिकली दिस फार्म एक्सपोर्ट्स द ऑरेंजेस, है ना. दिस फार्म एक्सपोर्ट्स देयर ऑरेंजेस टू कंट्री ई, एंड देयर आर लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. बेसिकली मैन्युफैक्चरर के परस्पेक्टिव से बोलूं, सो दोज मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली import the oranges from country Z. This is what is happening right now, right? अच्छा, फिर अगर कंट्री ई ने इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया, तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है बेसिकली टैक्स. और अगर टैक्स लगा दिया, बेसिकली अमाउंट लगा दिया, तो मैन्युफैक्चरर अगर यहाँ से अब खरीदना चाहेगा तो शायद उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर वो यहाँ तक आते आते उस पर टैक्स ऐड हो जाएगा. और टैक्स ऐड होने के बाद फिर जो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली, है ना. क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने. जैसे पाकिस्तान में अगर मुझे कोई जर्मनी की, जापान की गाड़ी इंपोर्ट करना होगी, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा ड्यूटी पे करना होती है. सो इट एक्चुअली कॉस्ट्स अ लॉट बिकॉज ऑफ 200-300% ड्यूटी, लेट्स से, ऑन कार्स इन पाकिस्तान. सो द पॉइंट इज कि अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता, टैक्स टैरिफ लग जाता है बेसिकली, या टैरिफ और ड्यूटी, तो फिर ये इम्पैक्ट होता है, मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट बढ़ जाती है. सही है. लेकिन एक और चीज़ होता है कोटा. कोटा इज नॉट द टैक्स, बट कोटा इज बेसिकली द फिजिकल लिमिट. जैसे अभी जो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर की, तो मैन्युफैक्चरर बेसिकली 600 टन खरीद लेता है हमसे. अब आप ये सोचो, कि अगर गवर्नमेंट ने टैरिफ के बाद कोटा लगा रहे हैं, कोटा का मतलब है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भाई 300 टन ऑफ ऑरेंज से ज़्यादा हम नहीं खरीदेंगे किसी और मुल्क से. यानी कि 300 टन अगर, या 400 टन मैक्सिमम लिमिट है, लेट्स से, तो क्या इससे फिर फार्म की सेल्स पे फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली. फिर मैन्युफैक्चरर 600 तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो तो ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट अलाउड नहीं है. तो फिर शायद मैन्युफैक्चरर जितनी लिमिट होगी 300-400 की, उतना ही खरीदेंगे. तो फिर अगेन अल्टीमेटली फार्म पे ही इम्पैक्ट आएगा. बट ये है कि शायद कोटा में तो फिर सीन ही ऑफ हो जाएगा ना, मतलब कोटा में तो, क्योंकि कोटा में तो अब आप बेच ही नहीं सकते. टैरिफ में फिर भी चांसेस होते हैं. टैरिफ में चलो कॉस्ट ज़्यादा होगी,
some of the manufacturers may actually still buy it, some of the manufacturers may still say कि नहीं चलो महंगा है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोटा में तो ये सीन है कि ऑफ ही हो गया ना, मतलब आप बेच ही नहीं सकते अगर आप लिमिट से एक्सीड कर रहे हो तो। समझ आए? अब खैर दोनों साइड्स पे लिखेंगे, पहले हम इंपोर्ट कोटा पे लिखते हैं कि इंपोर्ट कोटा का क्या सीन है, अगर इंपोर्ट कोटा लगता है तो उससे क्या होगा। फिर हम लिखते हैं इंपोर्ट ड्यू टैरिफ पे भी लिखेंगे कि इंपोर्ट टैरिफ अगर लगता है तो फिर क्या होगा। और फिर हमें कंक्लूजन देना होगा कि व्हाट डू यू थिंक कि इस सिचुएशन में लेट्स से इंपोर्ट टैरिफ का इम्पैक्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट कोटा का इम्पैक्ट ज़्यादा है। सही है। सो बेसिकली इसका अगर मैं माइंड मैप बना दूं, मैं लिख रहा हूं वैसे तो, लेट्स इट फॉर टैरिफ आई नीड 2 marks बिकॉज इट्स अ 6 marker क्वेश्चन। फॉर कोटा आई नीड 2 marks, and for my opinion or my conclusion I need 2 marks for this as well। सही है। और और आइडियली अगर ये 6 marker है मेरे पास, 6 mark का क्वेश्चन है, तो 6 mark का क्वेश्चन, इसमें मेरे पास 12 लाइन्स होंगी ना। सही है। ये अगर मैं लाइंस गिनूंगा तो ये 12 लाइंस होंगी, बिकॉज फॉर एवरी 1 mark देर आर 2 लाइंस। सही है। सो 6 mark है ना, तो 1 2 अगर गिनूंगा तो 12 लाइंस होंगी। सुनते रहो मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। अगर इम्पोर्ट टैरिफ के लिए मुझे 2 marks चाहिए, तो हाउ मेनी लाइंस आई शुड अलाउ आइडियली, अगर मैं एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ कि भाई उसको पता है कि 12 लाइंस हैं। सही है। अब वो 12 लाइंस में से I have to talk about tariffs, I have to talk about quotas, and I have to give my opinion, and I'll have to get 2 marks for each. So how many lines I should allow for this tariff key discussion? 4 lines. Ideally, I should allow 4 lines for tariff. Ideal बता रहा हूँ, मतलब कोई रूल नहीं बता रहा। और मैं रूल इसलिए मतलब आइडियल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो लिखने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपका एक पॉइंट कहीं मैक्सिमम 4 लाइन या कभी कभी चलो थोड़ा बहुत एक्सीड कर जाए, लेकिन आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई अगर आप लिखे जा रहे हो टैरिफ के ऊपर, भूल गए लिखते लिखते, अब यहां तक आपने टैरिफ लिखा लेट से, तो यू हैव रिटन टू मच, बिकॉज बिकॉज उसके 2 marks मुझे चाहिए थे। समझ आए? तो बेसिकली लाइंस की प्लानिंग भी आप अपने साथ अपने माइंड में चलाना, कहीं ऐसा ना हो कि लिखते लिखते आपको ख्याल ही ना रहे, आप ज्यादा लिख दो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को आपने 6 लाइंस दे दी, और फिर आपके पास जगह नहीं बच रही है, अब आप घुसा घुसा के फिर इस तरह लिख रहे हो, तो वो भी गलत है। आपको बीच में ही रियलाइज हो जाना चाहिए कि कहाँ पे ज्यादा हो रहा है। सही है। मैं लिखवा दूं, लिखो। इफ import tariff if import tariff is introduced in country E, then an additional amount, then an additional tax भी कह सकते हैं, indirect tax भी कह सकते हैं। If import tariff is introduced in country E, then an additional tax will be applied on the oranges exported by Raul's farm. If import tariff is introduced in country E, then an additional tax will be applied on the oranges exported by Raul's farm in country Z. This will increase the cost of purchasing for the manufacturer मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हैं या इम्पोर्टर भी कह सकते हैं, जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है ना बेसिकली। This will increase the cost of purchasing for the manufacturer, hence the sales। क्योंकि हमें एग्जाम में याद रखो कंटेक्स्ट भूलना है, ये लिखा ना है ना, देखो on an exporting business, so I'll have to make sure that I refer back to the question and I just talk about okay, this is how it is going to impact an exporting business. This will increase the cost of purchasing for the manufacturer, hence the sales of an exporting business might decrease.
hence the sales of an exporting business might decrease. देख रहे हो कितना पहले मैंने बताया कि इम्पैक्ट क्या है, मतलब ये चेंज होगा क्या, और इससे फिर एक एक्सपोर्टिंग बिजनेस सच एज राहुल को क्या फर्क पड़ता है. फुल स्टॉप के बाद इफ import quota is introduced, if import quota is introduced, then the physical limit, if import quota is introduced, then the physical limit will be applied, which might not allow the importer to export, importer to purchase required quantity which might not allow the importer to purchase required quantity of oranges. This can restrict the volume होता है number of units. This can restrict the volume exported by Raul, and therefore profits will be affected. देख रहे हो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4 लाइंस ईच जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर निकल गया 4 लाइन से, वो तो चलता है ऑब्वियसली, लेकिन व्हेन आई एम राइटिंग मेरे माइंड में ये भी चल रहा होता है कि कहीं लाइंस तो एक्सीड नहीं कर रही, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं मैं लिखने लगा, ताकि ऐसा ना हो कि फिर एंड में आके मेरे पास जगह ना बचे. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई गिव प्रॉपर स्पेस एंड प्रॉपर line allotment to my conclusion as well. सही है. और फिर मुझे देना होगा कंक्लूजन, और कंक्लूजन में मुझे देना होगा अपना ओपिनियन, और ओपिनियन के बाद मुझे देना होगा उसका जस्टिफिकेशन. वट एवर माई ओपिनियन इज, द एग्जामिनर इज क्लियरली आस्किंग यू फॉर योर ओपिनियन. वो कह रहा है कि आप बताओ कि भाई इंपोर्ट कोटा से ज्यादा फर्क पड़ता है या इंपोर्ट टैरिफ से ज्यादा फर्क पड़ता है. तो पहले आपको अपना ओपिनियन, क्लियरली अपना ओपिनियन देना होगा कि व्हाट डू यू थिंक, दैट what do you think that import quota or import tariff will have a greater impact on the business. और अब ओपिनियन कुछ भी हो सकता है. ओपिनियन आप ये भी लिख सकते हो कि भाई कोटा आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, आप ये भी लिख सकते हो कि टैरिफ आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, कभी कभी 2 साइडेड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बहुत स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि इम्पोर्ट कोटा या इम्पोर्ट टैरिफ. सो वट एवर योर ओपिनियन इज, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसके लिए अच्छी सी जस्टिफिकेशन लिखो. अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, चलो मैं ओपिनियन लिखवा दूं. सही, ओपिनियन आई थिंक कौन सा ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, टैरिफ और कोटा फॉर एन एक्सपोर्टिंग बिजनेस? क्या ओपिनियन देना चाहिए? टैरिफ विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स और कोटा विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स? कोटा सही है वैसे. कोटा इसलिए क्योंकि टैरिफ वुड बी लाइक के, मतलब दरवाजे तो खुले हुए ना टैरिफ में, आई थिंक. ठीक है, लेकिन फुल स्टॉप के बाद लिखो ओवरऑल आई थिंक भी लिख सकते हो, इन माई ओपिनियन भी लिख सकते हो, इट कैन बी कंक्लूडेड, इट कैन बी समराइज्ड, कुछ भी. लेकिन आई थिंक इसलिए क्योंकि इसने क्वेश्चन में डू यू थिंक लिखा था, तो देयरफॉर आई एम सेइंग आई थिंक. ओवरऑल आई थिंक दैट import quota will have a greater impact on an exporting business such as Raul. This is because import tariff, this is because impact of tariffs can be minimized
the impact of tariffs can be minimized by improving quality, as the manufacturers may still be willing to pay a higher price, if the quality is well differentiated. Full heavy words लेकर आ रहे हैं. If the quality is well differentiated. थोड़े से अच्छे वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब आपकी भी वोकैबुलरी अपग्रेड होनी चाहिए. आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी है ना, इस तरह से प्रैक्टिस के साथ वोकैब खुद ब खुद बिजनेस वोकैब की बात कर रहा हूँ. इंग्लिश वोकैबुलरी के कोई मार्क्स नहीं है. अगर आप इंग्लिश के कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स लिख देते हो या स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हो, उसके भी कोई मार्क्स लूज नहीं होते, ना ही कोई एक्स्ट्रा मिल जाते हैं. बट बिजनेस टर्म्स, द बिजनेस कीवर्ड्स, मेन उसका गेम है सारा. तो बिजनेस कीवर्ड्स, डिफरेंशिएशन, क्वालिटी, समझ आ रहा है, कॉस्ट्स, वॉल्यूम, दीज आर द बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. और जितना मेरे आंसर में बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा, उतना आंसर क्वालिटी खुद ब खुद ऊपर चले जाएगी. सही है, कॉपी कर लो. कोई सवाल, कोई बात, कोई प्रॉब्लम पूछ लो प्लीज. ऑल गुड.